Hello everyone, welcome to Odia 24/7 OPSC. I'm SK Rout here. Today I shall be bringing, brought a very important topic on Indian Constitution, that is the role and powers of the Chief Minister. देखिबा कि हमर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन क्षमता एवं कौन भूमिका रही देश राज्य शासन रे. ओके आज भिडियोटा तांको उपरे पर्यवेसित. I would like to share with all of you the role and powers of the Chief Minister of Odisha. The present Chief Minister of Odisha, Mr. Mohan Maji, is the 15th Chief Minister of Odisha, and he belongs to a tribal family. He was born in Raikala in Keonjhar district, started his career as a teacher and entered politics as a sarpanch. And his example is a very inspiring example for each and everyone in Odisha. Although he belongs to a very normal family, but he has raised himself to this highest position in the state government by dint of his sheer honesty, integrity, and public service. Let us see what powers he enjoys and what roles he plays in the interest of the states. Okay, he is the 15th Chief Minister of Odisha. And what are its powers and roles? Let us see. एवं ए वीडियो रे हमें जेतो इटा नो आवर ओडिशा जो थर्ड सेशन तुम समस्ते आर दीटा सेशन देखि सारछ एवं प्रति सेशन रे मु किछि क्वेश्चन दिए तार आंसर नेक्स्ट सेशन रे कहे. आज भी जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर अछि तार आंसर गुरा हम कहि देबी एवं पुनी 10टा क्वेश्चन देबी तुम मन को रेस्पोंड ठीक से करिवो. एवं जदी नो आवर ओडिशा बैच रे जॉइन करिवार अछि ताले अड्डा 247 ऑफिस रे कांटेक्ट करिवो नले से कमेंट रे लिखिवो को मन इंटरेस्टेड अछो. विल स्टार्ट द बैच सून. ठीक है, हम बैच स्टार्ट करिवो एवं आउरी कहि रखे कि ए जो नो आवर ओडिशा और ए जो बैच रो माने पर्पज हैला टू एक्वेंट ऑल ऑफ यू विथ the questions on Odisha history, Odisha geography, Odisha polity and governance, all these things. So jo jete various state government jobs re basically considerable number of questions are based upon Odishan history, culture, एगुरा सब ऊपर बेस करूँ. तेणु तुम मैंने ए बैच रे जॉइन कले बोथ MCQs एंड ऑल्सो लॉन्ग टाइप आंसर पाइबो जो माने सिविल सर्विस OPSC प्रिपेयर करूछो तांको पे भी एटा हेल्पफुल हो बैचटा. जतरे हमें बहुत सारा PDF दबु मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुरा एवं किछि न्यू मॉडल क्वेश्चन भी दिया जिवो आंसर राइटिंग पई. तो सेति पे जॉइन एज सून एज पॉसिबल एवं आर रेट भी कमी दिया जाइछि बोधे 3999 रखाई छी. तो यू कैन यूज माय कोड also Y963. by that you will get discount. ठीक अछि. So decide and join. ठीक अछि. आरंभ करिबा में नो आवर ओडिशा रो थर्ड सेशन. This batch, but this course meant on based upon history, polity, geography, economy, ecology, current developments of Odisha. It is all in one composite course रही चीटा. तेनु जो माने भी join करिवो तांको पे बहुत benefit रहिबो कारण ओडिशा ऊपर कोनोसी क्वेश्चन रा सुविधा रहिबोनी. बहुत सारा MCQs रहिबो, बहुत सारा लॉन्ग टाइप आंसर भी रहिबो, शॉर्ट टाइप आंसर भी हमें देबा. ठीक अछि. आरंभ करिबा जी. तो लास्ट रे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस सेशन रे जो क्वेश्चन दिए था तार आंसर मु कहबी एवं आउ किछि क्वेश्चन देबी तुम मन को डील करिया पे. ठीक अछि. आरंभ करिबा. रोल एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. रोल एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. Before going to discuss the role and powers of the CM, let us know about his constitutional position. CM is a constitutional office. Article 163 mentions that there shall be a council of ministers headed by chief minister to aid and advise the governor, who shall act in accordance with such aid and advice.
तो जो एड एंड एडवाइस पार्लियामेंटरी बा संसदीय सरकार व्यवस्था जो आम देश में चली से मुख्यमंत्री आ मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव इज द रियल रूलर तेणु चीफ मिनिस्टर होती डिफैक्टो रूलर ऑफ द कंट्री स्टेट डिफैक्टो रूलर इज द डिफैक्टो माने कौन वास्तव डिफैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट डिफैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट is the de facto ruler. How can say na he or she is the virtual head but actual real head of the state government, real head of the state government. She is Rajya Sarkar. He is the head of the government. He is the head of the state government. এবং पार्लियामेंटरी सिस्टम रे ये जो एड एंड एडवाइस अच्छी 163 आर्टिकल रे से एड एंड एडवाइस टा बाइंडिंग अपन द गवर्नर ऑल्दो गवर्नर हैज सम डिस्क्रेशन जदियो गवर्नर कर किछि डिस्क्रेशन अच्छी बा किछि विदाउट एड एंड एडवाइस रे से किछि काम करि परिबे किंतु मोस्ट ऑफ द वर्क इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट is done by the governor only on the aid and advice of the council of minister headed by chief minister. तेणु से मुख्यमंत्री राज्य स्तर रे मुख्यमंत्री जो स्थिति पॉलिटिकल पोजीशन इज वेरी एनविएबल or at the highest authority say he decides and the success and failure of the government depends upon his personality, his etiquette, his wisdom and his experience. तेणु राज्य सरकार रो सफलता बा विफलता मुख्यमंत्री को ऊपर स्क्वायरली डिपेंड करे बा प्रकृत डिपेंड करे कारण यदि मुख्यमंत्री इट डिपेंड्स अपॉन द विजडम द एक्सपीरियंस द एटिक्वेट एंड अप्रोच ऑफ द चीफ मिनिस्टर of the state. So virtually in a parliamentary democracy that we have, Chief Minister plays a significant role in the successful functioning of the state government. But one thing you must remember that Constitution does not mention in the clearest of terms about the appointment, qualification, role and powers of the chief ministers. Constitution तांको विषय रे बेसी वर्णना करिने only 3टा आर्टिकल मन रखा जाऊ कि 3 articles are related to chief minister. गोटे हला तुमरो कोन गोटे हला तुमरो गोटे हला 163 163 आर्टिकल 163 आर्टिकल 164 आर्टिकल 167 ए तीनोटी आर्टिकल चीफ मिनिस्टर सहित रिलेटेड अच्छी बोले हम कहि परियो जेंति प्राइम मिनिस्टर 74 75 78 जेंति मुख्यमंत्री तीनोटी मेजर आर्टिकल्स रहउची गोटे 163 जो थरे कहै छि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर एंड हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एड एंड एडवाइस दैट इज ऑलमोस्ट बाइंडिंग इन नेचर 164 रे बहुत सारा जिंस अछि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एटा मेजर जिंस अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स and role and powers or functions of the role and powers of the ministers and chief ministers. All these things are mentioned in 164 and 167 is the duties of the chief minister towards the governor like 78. ठीक है the duties of the chief minister is related to of the CM is mentioned in article 167. Is that clear? So 163 is Council of Ministers headed by CM. एथरे aid and advice कथा कहै aid and advice. ये जो aid and advice ता गवर्नर प्राय मानिबे सेति पई मुख्यमंत्री डिफैक्टो सॉवरेन रूलर से होचंदी वास्तव शासक राज्यर से वास्तव शासक ठीक अछि किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे तांको पावर ऊपर इलाबोरेटली बा डिटेल डिस्कशन नाही एटा केमते हमें कहिबा तले पावर्स रोल्स एटा बेस्ड अपॉन द कन्वेंशंस पार्लियामेंटरी कन्वेंशंस परंपरा ऊपर बेस कर सो रोल एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर मोस्टली बेस्ड अपॉन पार्लियामेंटरी कन्वेंशंस बा प्रेसिडेंट्स से ऊपर बेस कर डिस्कस करिबा रोल एंड पावर्स ऑफ द
कौन the role and powers of the CM प्लान रोल एंड पावर ऑफ द सीएम को हमें तीन भाग व्यक्त करिबा रोल एंड पावर हमें तीन चारि भाग व्यक्त करिया चारि भाग गोटेला इन रिलेशंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तापरे इन रिलेशन टू गवर्नर तापरे इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर बोल से देखो लेजिस्लेचर और अदर पावर्स look at the analysis, look at the powers, division of powers of the chief ministers that are divided into 4 parts. What are the powers of chief minister in relation to council of minister अर्थात मंत्री परिषद पई तांकर कोन भूमिका अछि एवं इन रिलेशन टू गवर्नर तांकर गवर्नर को प्रति कोन भूमिका अछि एवं राज्य विधानसभा जोटा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हमर अछि तो ता पई तांकर कोन भूमिका अछि एवं अदर पावर्स रे कोन हमें देखिबा अदर पावर्स रे रही अदर पावर्स ऑफ द कोन अछि सेटा देखिबा ठीक अछि सो दीज आर द मेजर थिंग्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर आगे देखिबा इन रिलेशन टू द मिनिस्टर्स इन रिलेशंस टू the council of ministers तांकर मंत्री परिषद पई कोन पावर मंत्री परिषद पई तांकर कोन पावर्स अछि व्हाट आर द पावर्स रिलेशन टू द चीफ मिनिस्टर्स प्लान चीफ मिनिस्टर virtually the head of the council of ministers is the head of the council of ministers first head of the council of ministers the head of the council of ministers supreme Devuchanti council of minister supreme and another thing ki governor appoints only those persons as the ministers of the state ministers who are recommended by the CM look at that गवर्नर केवल सेई माननकु मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट करिवे जो मानकर ना मुख्यमंत्री रेकमेंड करिवे ता अर्थ कोन ना गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज मिनिस्टर्स इफ he or she is not recommended by chief ministers then जदि गोटे लोक रो नाटा को मुख्यमंत्री रेकमेंड न करिवे ताले गवर्नर तांको मुख्यमंत्री करि परिबेन ए मंत्री करि परिबेन so that is why the decision in the selection of minister goes to the chief minister his decision is final he decides who will be the ministers in his government because it is his government बर्तमान आम कौन कहे मोहन माझी सरकार अर्थ मोहन माझी मंत्रिमंडल सेटा सी रिजाइन कले समस्त रिजाइन करी ठीक अच्छे दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड नेक्स्ट पॉइंट आसीबा he or she allocates and reshuffles the portfolios among the ministers सी allocate करिवे
मुख्यमंत्री विभाग पोर्टफोलियो माने कौन पोर्टफोलियो माने विभाग जो मंत्रिमंडल किए को विभाग मंत्री हम सेटा मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे एवं रिसफल माने कौन बदलैबा मंत्रिमंडल अदल बदल करवा तो सहीटा सी मेजर जिनस करेंगे सहीटा सी जहाँ करेंगे सी so he allocates माने बांटिबा reshuffles माने बदलैबा so he allocates and reshuffles portfolios among the ministers it is major thing next he or she can ask a minister to resign or advise the governor to remove him or her से गोटे मंत्री को चाहिए कही परिबे कि रिजाइन करने को नहले से गवर्नर को एडवाइस देबे कि तांको रिमूव कर दे एमती कहीं करंती ना गवर्नर ए चीफ मिनिस्टर डज नॉट हैव द डायरेक्ट अथॉरिटी टू रिमूव ए मिनिस्टर बिकॉज ए मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर तेणु गोटे मिनिस्टर गवर्नर तांकर रेजिग्नेशन बा तांकर रिमूवल लेटर रे साइन करिवे किंतु मुख्यमंत्री बिना एडवाइस रे गवर्नर कौन सी मंत्री को बाहर करि परिबे so that is why the virtual head of the ministers is chief minister so he can ask a minister to resign or to advise the governor to remove him यदि मिनिस्टर रिजाइन न कले ताले सी कहिबे मिनिस्टर गवर्नर को कि तांको बाहर कर दियो मंत्रिमंडल and his decision is obeyed mostly followed by the governor ठीक अछि that is also a point to be remembered next ଆସିबो हम तारो next power कोन he or she chairs the meetings of the council of ministers and influence its decision जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर हेड सी तार मीटिंग रो चेयरमैन से चेयर करते अर्थात सभापतित्व करते एवं जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निष्पत्ति निये सेटा मुख्यमंत्री भाग थाए मुख्यमंत्री इन्फ्लुएंस थाए सी कथा ही रखा जाए सी जहाँ कहती सेटा फाइनाली रहे पिलाने एटी गोटे बड़ कथा होची जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने एटी कैबिनेट कारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट मीट एज ए बॉडी कारण गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे डिफरेंट टाइप्स रो मिनिस्टर थांती कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर एमान सब थांती किंतु प्रकृत मीटिंग कार हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर कारण गोटे कैबिनेट मिनिस्टर अंडर रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करती तो से जो मीटिंग टा अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा होची किंतु प्रकृत मीटिंग हुए कैबिनेट ता माने द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कैबिनेट ही और सी इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कैबिनेट स्टेट रे जो कैबिनेट मिनिस्टर थांती तांकर सी होचंदी चेयरपर्सन ओके दैट इज आल्सो ए पावर he or she guides controls and coordinates the activities of all ministers. Please follow this. He guides, controls and coordinates the activities of all ministers. Okay, that is also a power. He coordinates all the activities
activities of all ministers, because he is the responsible, he is the guide, he is the authority of the council of ministers. Success and failure of the government depends upon his decision. ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ, he or she is the primus inter pares. Primus inter pares माने कौन? First among equal. His resignation, his or her resignation, death leads to the collapse of the government. He is the primus inter pares. It's first among equals. He is a minister, but he is the chief minister. His death, his resignation leads to collapse of the government. यदि मुख्यमंत्री रिजाइन करती डेथ हुए ताहले मंत्रिमंडल इमीडिएटली रिजाइन कर, बट ए रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ ए मिनिस्टर डज नॉट लीड टू कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। गोटे मंत्री किंबा गोटे मंत्री कौन सी प्रकार भी मंत्री जदि से रिजाइन कले बट डेथ है ताले गवर्नमेंट किसी प्रभावित हेनी, आउ गोटे जन मंत्री आसो, किंतु मुख्यमंत्री डेथ हेले बा रेजिग्नेशन देले सांगे सांगे इमीडिएटली सरकार कोलैप्स हो, तापर गवर्नर अल्टरनेटिव बाछिबे, सेटा अलग कथा। सेकेंड गवर्नमेंट एरिया तमाने गवर्नमेंट इज नेम्ड आफ्टर द चीफ मिनिस्टर, नहीं कि हमें कौन कहूँ मोहन माझी सरकार, तमाने गवर्नमेंट इज नेम्ड आफ्टर द चीफ मिनिस्टर, सो ही इज वर्चुअली देयर। And apart from this, he also chairs certain cabinet committees and he guides or directs the ministers. I tell you that the conduct of the council of minister is the conduct of the chief minister. जहाँ मुख्यमंत्री माने करिवे सबु जाक माने सबु जाक तांकर मुख्यमंत्री ऊपर ही बेस करिवो, तांकि से भलो कले मुख्यमंत्री सुनाम पाइबे, मंत्री माने खराब कले मुख्यमंत्री दुर्नाम पाइबे। तेणु सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेल्योर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इन अदर सेंस ही इज रेस्पॉन्सिबल, ही इज इंस्ट्रूमेंटल to the success and failure of the government. These are the powers of the chief minister in relation to the council of minister. Next asiba mein in relation to the governor. In relations to governor. First remember eta article 167 re mention achi, he or she is the principal channel of communication between the governor and the ministers. Is a bridge. Is a bridge between the governor and the council of ministers. Whatever is reported to the governor it should be in the knowledge of the chief minister. जहाँ भी मंत्री माने गवर्नर को कम्युनिकेट करिवे सब चीफ मिनिस्टर थ्रू रे पास थ्रू रे, and he is a principal channel of communication between the governor and the council of ministers. That is also there. He communicates all affairs of the government, of the council of ministers, and proposals for legislation
to the governor. Look at this point, very important. He has a constitutional duty. Chief Minister has a constitutional duty to communicate all the affairs of the government, all the affairs of the Council of Ministers means all the decisions. जहाँ मंत्री परिषद जो निष्पत्ति नब कैबिनेट स्टेट कैबिनेट सेटा से गवर्नर को जनइबे एवं जहाँ जहाँ सबू कौन प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन जहाँ विधानसभा रे जो बिल आगत हबो जो बिल पास हबकु थिबो बा बिल अमेंड हबकु थिबो सेगुरा सबू गवर्नर को मुख्यमंत्री जनइबे एटा गोटे तांकर कर्तव्य एटा गोटे संवैधानिक ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एटा तांकर इज दैट क्लियर ओके नेक्स्ट आसीबो हमें he or she shall furnish माने कौन प्रोवाइड furnish such information relating to the affairs of the state or affairs of the state or proposal and proposals for legislation as the governor may call for. आउटे कौन ना से सब इनफॉरमेशन मुख्यमंत्री देवे गवर्नर को जो इनफॉरमेशन गुरा गवर्नर मागिबे मैं कॉल फॉर माने कौन मैं रिक्वायर मैं आस्क एमती तो नेचुरल जहाँ जहाँ हम सी निष्पत्ति जनइबे जदि गवर्नर आउ किछि जानिया को चाहूचंती ताले सी जहाँ मागिले एटा मुख्यमंत्री देबे ही मे कॉल फॉर एटा सब 167 ठीक अछि and another thing he or she ensures collective decisions ना एटा कौन ना जदि कोनोसी मंत्री एकुटिया निष्पत्ति नहीं जाइछंती कोनोसी सरकारी कार्य रे बा सरकारी निष्पत्ति नहीं छंती जोटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा स्टेट कैबिनेट अप्रूव करिनी ताले गवर्नर विल आस्क द चीफ मिनिस्टर सबमिट द मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट ऑन व्हिच a decision has been made by a minister but not considered by the council बुझी होची त माने सेटा कोनती कलेक्टिव डिसीजन त माने जदी गोटे विषय रे कोनोसी जणे मंत्री निष्पत्ति नै छंती एवं सेटा स्टेट कैबिनेट रे अप्रूव हेनी ताले गवर्नर मुख्यमंत्री को कहिबे जे ए मैटर टा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे अप्रूव करे नियंतु ता अर्थ आ द्वारा गवर्नर कोन करंती कलेक्टिव डिसीजन को एनश्योर करंती ता अर्थ आम देश रे डिसीजन मेकिंग टा सरकारी डिसीजन मेकिंग बा पब्लिक डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड अपॉन प्लूरल डिसीजन मेकिंग मेथड त माने our decision making system बा our decision making is pluralistic in nature गोटे सिंगल लोक डिसीजन नबो एटा कैबिनेट जहा निष्पत्ति नबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटायरली निष्पत्ति not the chief minister, not the ministers alone. So that is also a constitutional requirement that if a decision has been made by a minister but not considered by the council of ministers, then the governor will ask the chief minister to submit such matter for the before the council of minister for its consideration. That is known as collective decision making. ठीक है next आसीबा में he or she advises the governor in the appointment
to measure constitutional and statutory offices. Such as number 1, State Election Commissioner, a constitutional office. State Election Commissioner, तापरे chairperson and members of chairperson and members of OPSC, Odisha Chief Minister कथा में कथा होचे, members of OPSC. Number 3, chairperson and members of Odisha Human Rights Commission, Odisha Information Commission, etc. Look at this. Okay, he advises the governor in the appointment to major offices. In the Advocate General टा भी लिखी दिया थी number 4. Number 4, Advocate General. तो जो constitutional office व statutory office रा appointment हुए राज्य रे, राज्य निर्वाचन अधिकारी कमिशनर OPSC रो चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स अपॉइंटमेंट हला, ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन रो अपॉइंटमेंट हला, ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन रो अपॉइंटमेंट हला. एगुरा सबु किए करेबो, मुख्यमंत्री को एडवाइस रे गवर्नर करंती. एवं स्टैट्यूटरी ऑफिस स्टैट्यूटरी ऑफिस को गुरा सब ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन, ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन गुरा सब स्टैट्यूटरी ऑफिस. एवं एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस 165. तो ये सब अपॉइंटमेंट पूरा राज्य रे जो हुए एटा गवर्नर को ना रे हुए, किंतु मुख्यमंत्री को एडवाइस ही एथिरे दरकार. Chief Minister advises the governor in the appointment of these constitutional and statutory authorities. This is the power. These are the powers of the Chief Minister in relation to the governor. ठीक है. एबे आसीबो स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर रे कोन तांकर पावर अछि देखिबो. स्टेट लेजिस्लेचर ठीक अछि. स्टेट लेजिस्लेचर देखिबो in relations to the CM, the state legislature. प्रथम जिनस the CM is the leader of the house. House means what? SLA, State Legislative Assembly. Leader of the house not mentioned in the constitution, but it is mentioned in the rules of procedure. It is a statutory office recognition achar. जेमती लीडर ऑफ ऑपोजिशन थांती सेमती सरकारी दलर जने लीडर ऑफ द हाउस रहे एवं से मुख्यमंत्री निजे हुअंती. मुख्यमंत्री बा चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द विधानसभा. लीडर दीटा लीडर थांती, गोटे अपोजिशन लीडर, गोटे लीडर ऑफ हाउस. ठीक अच्छे. पार्लियामेंट्री सिस्टम रो इटा होची व्यवस्था. he is the leader of the house and he plays a very important role in deciding the type of legislation to be introduced. को बिल टा इंट्रोड्यूस हबो, को बिल टा हबो नाही, कोटा प्रायोरिटी दिया जीवो, कोटा सेकेंडरी इंपोर्टेंस दिया जीवो, कोटा आगो अमेंड हबो, कोटा करिवा दरकार न करिया दरकार, को बिल टा आगो आगत हबो, पास हबो, सेटा मुख्यमंत्री डिसाइड करंती. लीडर ऑफ द हाउस डिसाइड करे बेसिकली. ठीक अछि. तो इटा he advises the governor in summoning and proroguing the sessions in the SLA, State Legislative Assembly, Vidhan Sabha. He also advises for the
advises the governor for the dissolution of the SLA, State Legislative Assembly. Look at these points. He advises the governor in the dissolution of the Legislative Assembly at any time. जे कोनोसी समय इट समनिंग एंड प्रोरोगिंग माने कौन जो सेशन अच्छी आमर बजेट सेशन मनसून सेशन एगुड़ा जो अच्छी सब सेशन गुरा एगुड़ा सी एडवाइज करेंगे केतबले डका हम केतबले एंड हम प्रोरोग माने कौन एंड ऑफ द सेशन तेणु से सेशन गुरा केतबले एंड हम केतबले आरंभ हम सेटा गवर्नर करंती किंतु सेटा मुख्यमंत्री एडवाइस रे करा जाए एवं सी जे कोनोसी समय विधानसभा भांगी दबा पई गवर्नर को आदेश दे जो एडवाइस करि परन ही मे एडवाइस सॉरी दैट इज ही मे एडवाइज द गवर्नर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द विधानसभा एट एनी टाइम किसी समय तो एमती अच्छी डिसोल्यूशन टा धर गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय विधानसभा देन गवर्नर विल रिजाइन and as a governor will dissolve the government, the legislature, or find out any option, and he may ask the governor, he will ask the government, state government or the council of minister to resign. यदि नो कॉन्फिडेंस पास है किंतु नॉर्मल टाइम्स रे भी चीफ मिनिस्टर चाहिए विधानसभा भांगिबा पई गवर्नर को कौन उपदेश दे पारंती एवं वर्चुअली तांका उपदेश गुरा गवर्नर मानती ठीक अच्छे दीज आर द पावर्स इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर आउ गोटे पावर होची स्टेट लेजिस्लेचर देखिबा हमें आउ गोटे पावर्स होची ही अनाउंसेस ही और सी अनाउंसेस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट on the floor of the house. से गवर्नर से गवर्नमेंट पॉलिसी गुरा विधानसभा रे मुख्यमंत्री घोषणा कर दीज आर द पावर्स इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर नाउ अदर पावर्स माने अदर पावर्स माने चीफ मिनिस्टर आउ कौन पावर रही तीन तो मेजर गला जोटा इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू गवर्नर इन रिलेशन टू चीफ जो स्टेट लेजिस्लेचर और अदर है कौन ना ही और सी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ कौन स्टेट प्लानिंग बोर्ड राज्य योजना बोर्ड से होचंती चेयरपर्सन राज्य रे कौन योजना हम स्टेट लेवल प्लानिंग मुख्यमंत्री इन्फ्लुएंस रहे से ही सेटा को डायरेक्शन दियंती ही और सी is the ex officio chairperson ex officio vice chairperson, you can write it ex officio vice chairperson, better write ex officio vice chairperson of the zonal council or you can write it here the Eastern Zonal Council. Odisha Chief Minister कथा देखुचे of the Eastern Zonal Council. प्लान जोनल काउंसिल होची गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी भारत को पाखापाखि 6टी जोन रे विभक्त कराई 1956 मसीहा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट रे भारत को 5टी जोन रे डिवाइड कराइतला एवं सर्दर्न नॉर्दर्न
वेस्टर्न ईस्टर्न एंड सेंट्रल ईस्टर्न जोन रे वर्तमान सेटा अछंती कि बिहार झारखंड वेस्ट बेंगल ओडिशा प्रति जोनल काउंसिल रो चेयरपर्सन होचंती यूनियन होम मिनिस्टर एवं तार जो उपसभापति रहती उपाध्यक्ष रहती राज्यर मुख्यमंत्री माने रहती तारा जो ईस्टर्न जोन रे जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में लिखीचे ईस्टर्न जोनल काउंसिल रे मेंबर हेले किए बिहार ओडिशा वेस्ट बेंगल झारखंड तेणु प्रति चीफ मिनिस्टर वर्षे वर्षे भाइस चेयरमैन असंती ताको कहंती ऑन रोटेशन वन आफ्टर अनदर होती सी होचंती भाइस चेयरपर्सन and who is the chairperson of zonal council all zonal councils union home minister and zonal council is a statutory platform for resolution of interstate issues जो अंतरराज्य बा राज्य राज्य भितर जो इश्यू हुए तार समाधान पाइबा ता ऊपर आलोचना करी समाधान करिया पे जोनल काउंसिल तैयारी कराई तमाने जोनल काउंसिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन इन इंडिया इंटरस्टेट काउंसिल जमती अच्छी सेमती जोनल काउंसिल तैयारी कराई राज्य राज्य मध्य सुसंपर्क रखिबा एवं राज्य राज्य मध्य प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन प्रतिष्ठा करिया पई जोनल काउंसिल गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी हिसाब रे भारत रे काम करुछि एवं भारत को वर्तमान 6टी जोन रे व्यवहार करा विभक्त कराई गोटे नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल एवं 1971 मसीह नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल तैयारी कराई तेणु ए जो जोनल काउंसिल तैयारी करिवार उद्देश्य है अंतरराज्य संपर्क सुदृढ़ रहिबो एवं भारतर जो संघीय राष्ट्र व्यवस्था अच्छी क्वासी फेडरल सिस्टम स्ट्रेंथेन हबो सेतिपई जोनल काउंसिल गुरा करा जाइछि एवं जोनल काउंसिल को रेकमेंड करथिला स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन और फजल अली कमिशन बेली मु बहुत क्लास रे कहि ठीक अछि so that is also a point next he or she is the ex officio member of नीति आयोग इंटरस्टेट काउंसिल नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल आउ लिखिबा अगर देखि दियो एटा मुख्यमंत्री जी हबो सी होचंती नेशनल नीति आयोग मेंबर रहिबे इंटरस्टेट काउंसिल गोटे 263 आर्टिकल रे अछि इंटरस्टेट काउंसिल रो मेंबर रहिबे सी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल रो मेंबर रहिबे हला आउ अछि तापर लिखिबा कंटिन्यू करिबा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग तार मेंबर रहिबे आउकार रहिबे नेशनल वाटर रिसोर्सेस काउंसिल नेशनल वाटर रिसोर्सेस काउंसिल एक्सेट्रा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी करि परिबा एटीसी he or she is the ex officio chairperson of a state disaster management authority. State disaster management authority. State disaster management authority. SDMA जोटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट अंडर तैयारी कराई एवं एमाने डिजास्टर क्षेत्र में ऑफिशियल डिसीजन बा फाइनल डिसीजन नियंती एवं ता देरे मुख्यमंत्री होचंती तार चेयरपर्सन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो जेमती एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जेमती प्राइम मिनिस्टर सेमती स्टेट डिजास्टर फॉर एग्जांपल ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट ओस्डमा ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तार चेयरपर्सन जी मुख्यमंत्री हेबे से रहिबे ठीक अछि मुख्यमंत्री को एटा ड्यूटी
एवं आ छड़ा पिला माने मुख्यमंत्री बहुत जो बहुत सिलेक्शन कमिटी रो चेयरपर्सन नन सिलेक्शन कमिटी टू recommend the appointment of chairperson and members of national जो state human rights commission selection of chairperson and members of Odisha information commission ए सब रो बीच माने करंती he or she also chairs the selection committee for the appointment of the chairpersons and members of OHRC, Odisha Human Rights Commission, Odisha Information Commission, एगुरा सबुरा चेयरपर्सन एवं लोकायुक्त आरबी सिलेक्शन कमिटी चेयरपर्सन नंती चीफ मिनिस्टर इज वन ऑफ द chairperson, one of the members, and he is the chairperson. तेणु किए लोकायुक्त हम किए ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन अध्यक्ष हम मेंबर हम किए ओडिशा सूचना आयोग किए मेंबर हम अध्यक्ष हम तो सेटा गवर्नर करती अपॉइंटमेंट किंतु मुख्यमंत्री एडवाइस रे मुख्यमंत्री सिलेक्शन कमिटी चेयरपर्सन रहती एवं सी रेकमेंड जो कमिटी जहाँ रेकमेंड करे गवर्नर ताको अपॉइंटमेंट कर एंड चीफ मिनिस्टर इज द क्राइसिस मैनेजर in the state. He is the crisis manager. Political crisis हो बा देश राज्य रे जो crisis हो that is virtually attended by the chief minister एवं he plays a significant role in resolving the issues of the state political emergencies हेडा से देखंती एवं he is the head of he or she is the head of political head is the political head of the state services and he or she is the leader of the ruling party we can conclude that chief minister is the democratic king or is the king in the parliamentary democracy that prevails at the state level. राज्य रे जो संसदीय व्यवस्था रही तार एम्परर हेले डेमोक्रेटिक एम्परर हेले मुख्यमंत्री. He has virtually almost all powers with regards to the governance of the state. तेणु राज्य गवर्नेंस रो सी होचंती मास्टर किंतु कह जाए आम जो कही एचआर ग्रीफ्स कर कथा जी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्राइब करते एठी भी आम अप्लाई करि परिबा कि the chief minister the government is the master of the state but chief minister is the master of the government. He is virtually the authority of the government. He has authority over the government. Jadi it depends. The nature, the characteristic of the state government is decided by the personality, etiquette, wisdom and experience of the chief minister. तेणु मुख्यमंत्री उपरे सरकार परिचय सरकार सफलता संपूर्ण भाव में पर्यवेसित थाए एवं सरकार तांकर एटिक्युएट बा तांकर एटीट्यूड विजडम एक्सपीरियंस द्वारा प्रभावित हुए एवं सारी पाई सरकार सुनाम पाई थाए एवं तारी पाई मध्य सरकार दुनाम भी पाई पारे. So that is why chief minister plays an instrumental role in the successful functioning of the state government. Virtually राज्य सरकार गोटे independent government under the constitution and in the quasi federal arrangement of India. So therefore chief minister is really the master of the state government. He is the keystone in the state cabinet. Well, I mean, keystone in the state cabinet and all the roads
to the state government, but all the roads of the state government goes to the chief minister, runs to the chief minister. Chief minister virtually is the supremo, is the emperor of the state government. So therefore, chief minister is to be revered, and he is really the highest constitutional position, or he is the highest authority of the state and the master of the government, the head of the government, and is the de facto sovereign ruler of the state. Got it? So that is the things over, and the present chief minister is the 15th chief minister of Odisha. So this is all about pilane. So हम गोटे short video नेले भलो लगी छि कि नहीं तुम्हें comment रे लिखिबो, एवं आज देखिबा हमें कौन कौन अच्छी क्वेश्चन गुरा जोरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु देइथिली एटा तुमको मु आंसर कहि बेली कहिथिली भलसे देखो. The literature which was promoted during the Mathara rule ta 4th century re gote Mathara शासन थिला 4th century BC re Mathara rule, एवं Mathara rule in Odisha, that was present day Ganjam district of Odisha and Srikakulam district of Andhra Pradesh, सेठी Mathara थिला, एवं एटा पाखापाखी from the end of the 4th century to the beginning of 7th century पर्यंत Mathara rule चलथिला देश रे, एवं सेमाने एटा जो कथा लिखाई लिटरेचर टा एटा संस्कृत भाषा रे थिला, तेणु द आंसर इज संस्कृत. बुझेला? द आंसर इज संस्कृत. एटा संस्कृत भाषा रे थिला, दैट इज योर संस्कृत. यस, संस्कृत हव आंसर. भलसे आंसर गुरा नोट करथिबा, खाता रे लिखुथिबा गुरा सब. The name by which Ashoka is generally referred to in his inscription, Priyadarshi. तांकर inscription रे अशोकଙ୍କ नाम प्रियदर्शी प्राय अधिकांश जगह रे यूज कराय छै. Next, number 3, the language used in Hathigumpa inscription, Jain inscription जो खारबळंकर सेटा पाली भाषा रे लिखाई छै. Pali भाषा रे लिखाई छै, so that is written as Pali. Yes, the second largest river in Odisha is Brahmani. Also answer ura dekho. Next, question number 5. The rivers of Dev and Indrani are the principal tributaries of which river? Okay, which river? Baitarani. Dev and Indrani are the two principal tributaries of Baitarani. The most abundant mineral found in Odisha is chromite. Highest producer, chromite. Also answer dekho pastor. Next question ko jiba. Baitarani, Brahmani, chromite, Priyadarshi, Pali, Sanskrit. ठीक है. 16. Next आसिया पिलाने. Next question गुरा. The second largest district area wise Sundargarh haba. Mayurbhanj first. Sundargarh eta hochi area wise. Baki Ganjam population wise egura सब रही. And lowest population by least populated जोटा अच्छी district having lowest population है Devgarh, एवं area wise smallest district है Jagatsinghpur. एटा टी नजर देखतिबो. Nalco Damanjodi was commissioned, means started production in 1986. National Aluminium Company. Next asiba Mamata scheme, which is popular women scheme that is in vogue today, was launched in 2011. And the number of seats owned by women in the present assembly, present hela pilane 17th assembly ta, ethire matra 11 jana women member achanti. Women, that is 7% of the total strength. So very low representation of women in the assembly in the present election.
एवं एटा से 33% रिजर्वेशन लागू हबो तेणु वोमेन मानक संख्या बढ़ाया पे सरकार 106 अमेंडमेंट आनिछंती जोटा कि 2029 रु लागू हबार अछि। तो वर्तमान विधानसभा रे 11 जन महिला सभ्य अछंती पूर्व थर रु कम अछंती पूर्व थर 14 थिले एबे 11 जन अछंती। सो दीज आर द आंसर टू योर प्रीवियस क्वेश्चन एबे एंत अछि एटा तुमे आंसर जदि करिथिबो केतेटा ठीक अछि मते कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाओ। एवं एबे देखो आज रो क्वेश्चन कोन अछि एवं से आंसर ता तुमे करिथिबो मु पुनी सेशन 4 रे तुमको एटा आनिबी एवं ता पूर्वरु तुमे यदि जॉइन करिया कथा बैच जॉइन करि जिबा कथा। Who is the first Advocate General of India? Epical in Odisha stands for first state election commissioner of Odisha. The number of subdivisions in Odisha. Odisha Boundary Commission was established in, and who is the first judge of the Odisha High Court to become the CJI? ठीक अच्छी, these are the questions. Kindly look at the questions thoroughly. एंड इटा को तुम करिथिबो आंसर एवं प्रिपेयर रखिथिबो मु ताको नेक्स्ट सेशन रे तुमको एमती आनिबी क्वेश्चन सबु तो एगुरा सब देखो तापरे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चारटा क्वेश्चन हो। ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर इन व्हिच ईयर वंदे उत्कल जननी बिकेम द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा। हु रोट द फेमस ओडिया नोवेल नीलशैल। Who is the first Odia woman justice? प्रथम महिला विचारपति किए एवं किए नीलशैल परी गोटे प्रसिद्ध नोवेल को लिखिथिले एवं को वर्ष वंदे उत्कल जननी राज्य स्तरीय संगीत हिसाब रे राज्य संगीत हिसाब रे मान्यता पाइला एवं ओडिशा मानवाधिकार कमिशन को मसिया रे गठन है। ठीक है पिलाने आज क्वेश्चन देखिल एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो आंसर तुमको कहीदेली भावुची सेशन गुरा तुमको भल लगुथिबो किंतु ए सेशन गुरा तुमको केवल झलक मु देखौची डिटेल क्लास भितरे आमे पूरा डिटेल्स डिस्कशन करिबा ओडिसा रा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गोटे करिबा। सो जॉइन द बैच इमीडिएटली एंड एक्सेस टू अदर 24/7 OPSC एवं एटा तुम्हें मो कोड यूज करी परिबो जॉइन द बैच लेके यूज माय कोड बिजनेस एटा Y963 to get discount. Join it immediately and join the batch that is Know Your Odisha Coup batch. Join the batch to have more authentic study on Odisha, Odishan history, Odisha culture, Odisha politics and others, and to avail good number of relevant questions both for prelim and MCQs for different examinations and also long type answer for Odisha Civil Service Examination and IS exam. Okay, so join the batch immediately. बाकी other batches गुरा टिके हम कहि दउची हमर जोगरा सब बैच अछि प्लाने एवं एटा जो वारियर बैच चलीची वारियर बैच टा गोटे बहुत बढ़िया बैच बहुत पिला जॉइन करलेनी पाखापाखि बहुत स्ट्रेंथ आसी गलानी नवा बैच आरंभ होबो तो अवेल करो बहुत कम रेट चीप प्राइस बर्तन आडा रखिची जे देतु एटा लॉन्च होउची तो अवेल करो 9108 अछि यू कैन यूज माय कोड टू अवेल मोर डिस्काउंट। ए छड़ा जो माने ओपीएससी प्रिलिमिनरी 27 तारिख रे दबो से दिन हमर पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अछि सेशन को जॉइन करिवो एवं ठीक 28 तारिख सुद्धा ओडिशा सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन पे आंसर राइटिंग बैच भी लॉन्च हबो जो माने प्रिलिम दे सारिवो इमीडिएटली आंसर राइटिंग बैच रे जॉइन करो मु आउ अन्य भल भल सार माने रहिबे जोटा प्रतिदिन किछि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराबो एवं पीडीएफ रे तुमको बहुत सारा प्रोबेबल आंसर भी दिया जिवो। ठीक अछि जॉइन दैट बैच इमीडिएटली एंड लाइक सब्सक्राइब एंड जोटा अछि तुमरो लाइक सब्सक्राइब एंड योर yes like share comment and subscribe. Okay, thank you very much for watching this session and I eagerly wait for your constructive comments in this regard. Join the batch immediately. Thank you very much.